Yeah, yeah. So, good evening, everyone. Welcome to eVital Community Call. Today, myself, Arun Prakash, and my colleague Miss Neelam, will present this community call. So, today is my turn to present this call. Before attending this meeting, I just gone through all the videos, which my colleague has given all the same thing, community call. So, I learned to do this meeting in a better way. So this meeting is for the community people to learn something new, and some retail shop may lost their existing staff, or recently joined new staff will be there, or some new peoples who are joined just now they have been onboarded. So this all this topic will be useful for them. So I just want you to uh, go with the things. So after finishing, we will start this topic. After finishing the topic, you can please ask the question related the topic. Then we will, at the end, we will have a session of for all your doubts. I know every person who are waiting here have so much of doubts, so much of things which has not solved for a long time. So I can understand that. So we will do that at a last session. So first, let me present myself. All these things. Today is the topic of different kind of discounts. So we'll just go for that. After finishing the topic, please ask the questions regarding the topics. And then later we will have the session with our colleague, my Miss Neelam is there. She's a product expert too. So she will have all the queries, all the doubts, and whatever the things you have for a long time, which the problem is not solved. So we will have the discussion in the last session. Last 10 minutes we will have the discussion. So I think we can start the session with the thing. Just I will share my screen for that. So today is the topic for the uh, different types of discounts for sales discounts, where we can see that. So everybody can see my screen. Is my screen visible? Yes. So today we will go for first we will see in a purchase. In purchase, how we can set a discount for the sales product. So whenever we add a new product or new bill regarding this purchase, so we will enter all these details, and then we will start adding the products. So after adding these products, we will enter all these things. So whenever we add this product, just before saving the purchase, we will have a location, save and set location. So we can see this here. We have a discount column especially for that. So in this discount column, we can put the discount, and we can save the product, and even we can lock the discount here itself. So it will be very useful for the staff who are using advanced software with us. We have who are the people having the staff management. So there they will be very useful, that they can do the discount from 0 to 10, not more than that. So they can do discount for 9, 8, 7, 6 like that, but not for 11. So here we can lock the discount, and just we can save the product. So like this we can have the discount column. We can set here also. If we forget, if sometime we forget to do these things, so we can go to the purchase again, and then we can just go and say there we will have a portion where, let's say, again we will have the set location and discount. So before selecting, we have to select the product, and then we have to do the set location. Again you will get to see the same page. So this is the first thing.
where we can save the discounts for the purchase. And after putting this in a purchase thing, then we can see in sales. I think many people know that we can do the customer based customer oriented discount also. We can give the customer discount here. If there is a new person, so we can add in here, and we can set a default discount here for every customers. We can add here. So this is the thing which we can do the discount in customer wise detail discount. So whenever the customers comes to our shop, and automatically whenever he purchase any product, it will start giving the same discount what you have set it here. So one thing we can see here. And another thing, again you want to see the discount of same thing. You can just go and you want to modify the same discount, uh, like the existing customer. Just you have to go here. You can edit the profile, and you can again give the discount here. We can do like this. So this is the customer based discount we can give from here. One minute. So this kind of discounts we can give here. So at present, if somebody has some doubt, so they can ask me regarding this. Until this, if somebody don't know what I have said, Sir, for example, we put the default discount for a customer for 10%, and in that bill, if there is some FMCG item also one or two, so can we edit for that particular single items also, or it will take the for the whole bill it will take 10% only? sir, if you have locked it for the item wise, okay, if it is locked, then definitely it will apply the what you have locked the highest margin, highest discount. But if you have not locked the item wise, not locked the particular discount, if it is FMCG is for 4% or 5%, that much you can give. If you are not locked, then definitely it will apply for 10%. If you have locked the product with the discount level, then definitely it will not allow more than what you have set it. Okay, okay. If we assume we have not logged and it takes 10% for all, including FMCG, can we edit in that bill for that particular FMCG item? Definitely we can do that, sir. 1 minute, I will Thank share you. the screen. So whenever we just see here, so if there is a discount, there is a default discount 10%, sir. Okay. So if this particular percent is 6%. So if if it is not locked, and you have just we have another option where we can go and update in bulk for hold the bill. If it is 10%, so we just submit it. So see, if it is in 6% is locked, then it will not show the it will not take for 10%. Thank you, sir. Sir, any other doubts regarding this, sir? Yeah, yeah, one question. Yes. You said about 10%. What if I have to give more than 10? Sir, actually, if it is not locked, you can give as much as you can. What is But the meaning of lock actually? What exactly what I will mean? tell you, sir. Actually, there is a two things what we have. We have a tablet version, and one we have a version for capsule, which is an advanced plan, which is used for staff level management. So every staff will have the uh, uh, particular username and password. They will log into that. And if you have logged as an admin, that you should not sell more than this. Like one person, if you have some Himalaya products or some Johnson and Johnson, which is an FMCG,
So you will not get more margin like drugs. So you will have minimum 2 to 3%. You can give the discount. So if you lock for 3%, right? So the staff can give 2%, 1%, or zero, but they cannot give more than three, like four, five. It will not allow to bill the particular staff. Understood. So But if I that, haven't done locking, then it is yes, possible to give 12, 15, whatever. Assume yes, I yes. am not talking about FMCG. Without locking, you can do anything, sir. Anything. Okay. And how do I apply it in bulk? Can I say that I don't want to apply it at a product level? For Yes, you every single drug in the pharmacy, Yes, apply sir. 12%. Yes, sir. You can do that. I will show you. So whenever you just go, there is an another option. Um, when you go in inventory, so inventory, there is a thing where you can apply for filter, and this is called lock, sir, where the lock symbol is there. Mhm. So for particular product, you can just edit here, and you can apply the discount 10%, and you can lock here, and then you can add it. So this will be applied for the particular product. Okay, so particular product 10%, right? So if there is a thing in category wise, if you have, like, if you want to select like drug, only for drug you are going to apply. So what, this is already applied. So you just want to select this item name, and it will select all the particular products in this page. So for that, you can just go here more, and then bulk update, and then you can change the discount for 12 to 15%, whatever he were, and you can click yes. In the lock discount, you can click here. And the people who are using B2B, like business to business, who are using distributor software, they can also lock here through yes. So they can also do that. From this yes, you can just add and update the records, and everything will be changed to 12%. So it will can be updated through all these things. But another problem is that, problem, it's not a problem, you have to do, it will whatever the products is selected in this page, it is like up to 20 or something. So that only we will then there will be a page for next. So then you have to go for the next page, and again do the same thing for the next page. Okay. And what is the maximum number of items in a page? Maximum number what you have, sir, already what you have purchased, right? What you Hmm. have purchased, what are the stocks you are having in inventory, that only will show here. So it will, Understood, understood. But you said you had to apply it at the page level, right? So a yes, sir, page can page, maximum hold how many? it's Like for 20. 20, sir, it's for 20. Okay. So if somebody has 2000 items, they'll have to do this 100 Yes, times. sir, but the problem is, see, the category wise, it will be very slow, right? If it is Mm-hmm. 2,000 products, then Ayurvedic will come, cosmetics will come, drug will come, Mm. FMCG products will come. So all it will not be in a 2,000, right? So for drug, maybe it is 300 to 400 products. So for every page, you have to apply that, sir. We are working on that. We have an internal all the customers feedback. So we are also working on that, sir. At the same time, they can give all these things. We are working on that. There is a feature request also Okay. from So at present, it is at a maximum level of 20 each. 20 to 30, 20, 20, 20 is there, sir. I see. I see. Okay. And if I put 12 and lock it using that bulk Yes, functionality, sir. where the pharmacist can The give farmers cannot, 8 instead of 12, but cannot give 15 instead of 12. no, they cannot even give 11. They can give 11, but not 13. Okay. So they can give 11, but not 13. But if they don't do anything, by default 12 will By be applied default, any we which can ways. change anything, sir, as a staff level. See, Yeah. you admin, by a logging through admin rights, okay, they Mm. can do any changes. But Mm-hmm. the staff level rights is there. So there you cannot change any discounts via the staff rights. Mm-hmm. Okay. So this is Okay. the place where I want you to show this. So this is the thing in inventory. So inventory, we have two places where we can set the discount. One is we can see set the discount on in an item level, wherever whichever the item, you can just click
here, and there in a third thing there is an edit item details. You just click there and you can change the default discount. And below that we have a lock discount, sir. So by locking this, you can immediately add it. This is the item wise. If you want category wise or dosage type, like dosage type you have tablet, capsule, cream, syrup, drop, whatever it may be. So you can just click the cream. So all the creams will available here, and just go for more. And for bulk update, you can start update by clicking the item name, so it will select all the items which is in the page, and then you can do the bulk update. So here you can see the default discount. You can change here, and you can use the tags also if you want to. Same time you can do that. So you can lock the discount for by clicking yes. And if the distributors software they are using, they can use B2B yes. So after adding this, it will update to whatever the discounts we have applied. Now it is for 0. Okay, sir. So like these two types we can add the discounts for the particular items, item base, and also bulk update. So no Excel sheet based upload, those kind of bulk mechanisms possible if one has to do for, let's Sir, say, more actually, than 1,000. it will become a very big problem, sir. I think so, Okay. because what happened? We have some catalogs which is centralized catalog. We are using all kind of things. There is no duplicate in our catalogs, so it is all maintained by us. Usually, we have a highest number of catalogs already available in our market. So Mm-hmm. whatever the name you give through to us, like you can give like Dolo 650, you can give D650, right, sir? Mm-hmm. So that will come into our and then again you have to do the marking over us. Then it will create so much of double time work. So instead of that, you can do in our software itself like this only, sir. Yeah, yeah. I just wish the page restriction was not there. Anyways, please go ahead. Yes. Actually, what is there? Uh, we would suggest you the best way to implement discount on all of your inventory is as soon as you receive a purchase, you go to save and set and apply the discount. This is a one-time process. Once I've set discount on Dolo 650, any batch, it becomes product level discount. So the next time you purchase Dolo 650, you don't have to apply that discount again. It is there. But going into inventory and then setting a discount even in bulk on 20 products, right? So that becomes a very hectic thing. So we Yeah, I would mean, suggest sometimes you we to change go the for the policy, right, at a organization level. So how do we bring in that change management is the question here. And that time we may have to do it for, let's say, 4-digit number of items, if not 5-digit number of items. So this is also doable. Going by 20 per page, you still go and do it. Just that it is a bit cumbersome. That was my only comment. But I get it. We'll manage. okay. What you said is applicable only if the discounts are never going to change, right? It might change when we kind of experiment with the policies. Yeah. So, sir, any other, sir? So any doubts regarding the discount types of discount? ये तो ये डाउट है सेल्स में जैसे कुछ आइटम्स होते हैं अपने जेनरिक जिसपे 12 से 20% डिस्काउंट होता है कस्टमर को अपन ने 12 या 13% डिस्काउंट डिफॉल्ट सेट कर रखा है उस कंडीशन में जो जेनरिक वाला आइटम है जिसको अपन 20% डिस्काउंट हर किसी रेगुलर कस्टमर को भी देते हैं लेकिन उसको वो 13% में जाएगा फिर Yes, sir. तो इसका कोई कुछ सॉल्यूशन मुझे बताइए सर आई थिंक ये जो डिस्काउंट का क्लबिंग है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपने कस्टमर लेवल डिस्काउंट सेट किया है तो नो मैटर क्या आपका प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंट है, कस्टमर लेवल आपका डिस्काउंट हमेशा ओवरराइड करेगा। क्योंकि अगर आपका कोई लॉयल कस्टमर है और आपने सिस्टम में फिक्स किया है कि प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंट कोई भी हो, आपको इस कस्टमर को 10% डिस्काउंट देना ही है, सो दैट कस्टमर विल ऑलवेज गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। But apart from that, if your staff has the permission to change the discount, of course they can go and edit that discount. If that discount is not logged, then they can go and edit that discount if you want.
And of नहीं course, the मैम, उस owner कंडीशन में admin क्या have होता है, all the जैसे rights. जी जी, कंडीशन क्या होती है, जैसे 3 कस्टमर खड़े हैं उस टाइम में, उसमें एक कस्टमर की बिलिंग कर रहा हूँ मैं, और जो मेरा कस्टमर सेट है उसमें कस्टमर लेवल पे डिस्काउंट सेट कर दिया। एक आइटम है 100 रुपए का, 100 रुपए एमआरपी, और वो जेनरिक में 80 रुपए का बिकता है। तो वो उस कस्टमर के, तो वो बाकी कस्टमर को तो मैं 80 का बिल दे रहा हूँ, उसको 87 का बिल जा रहा है, Okay, क्योंकि वो understood. आपका मतलब उनका 13% डिस्काउंट डिस्काउंट पूरे बिल पे कम लागू हो सेट गया किया ना। हुआ है. मैंने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट सेट किया, वो नहीं सेट हो पा रहा उस पे। Okay, I think in that case they will need to edit the discount, go back and edit the discount currently, because we don't have any such process in place, but I will take that as feedback and pass it on. सर एक्चुअली आपका सजेशन क्या है सर, आपको क्या चाहिए सर एक्चुअली? मेरा सजेशन ये, जो अपन ने लॉक कर दिया है, जिस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अपन ने लॉक कर दिया है, ठीक है सर, फिर उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। आपने अगर लॉक कर दिया प्रोडक्ट जी। वाइज और अगर कस्टमर आया हम्म। तो आप क्या करोगे? कस्टमर वाइज नहीं देना चाहिए उनको और बाकी के प्रोडक्ट में? नहीं नहीं नहीं, आप मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन पे 20 से 30% डिस्काउंट मार्केट में चलता है, ठीक है, ठीक है। और जो इथिकल प्रोडक्ट है उनमें 12 से 13% नॉर्मल जाता है, 10 से 12-13 सब पेशेंट का अलग अलग है। तो ओके। अपन कुछ ऐसा सेट करें कि हाँ, जो जेनरिक वाले आइटम है उसमें ऐसा डिस्काउंट अपन सेट कर दें कि हाँ, वो लॉक हो जाएगा, तो वो चाहे कोई भी कस्टमर हो उसी रेट में जाएगा। जो भी कस्टमर हो, मगर जो प्रोडक्ट में आपने जो डिस्क्राइब किया वही होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? जी जी जी। सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट में ऐसा चाहिए सर? हाँ, ऐसा जेनरिक में हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसमें अलग से अगर शाम के टाइम आ रहे हैं, भीड़ है, उस टाइम एक एक को एडिट करके बैठना फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसमें थोड़ा मार्जिन भी हमको ज्यादा मिलता है, तो ऐसा प्रॉब्लम जी होता है कि आप अब जी ऊपर नीचे कर नहीं सक रहे, ऐसे बोल रहे हैं? जी जी। ठीक है सर, मैं इसको ले जाता हूँ सर कंसर्न डिपार्टमेंट डेवलपमेंट टीम में, और आपको थोड़ा रिवर्ट करते हैं सर कैसे करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। फॉर द सजेशन सर। So any other questions sir regarding this discount related things? हेलो Yes sir. सर, मेरे एक इस तरह का मतलब सजेशन है Yes sir. कि कुछ कुछ कस्टमर्स के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हायर मार्जिन होता है। मान लो जैसे अभी सर Generic. कह रहे थे जेनरिक पे कह रहे थे, या कुछ प्रोडक्ट सर्जिकली भी होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो किसी किसी कस्टमर से कमिटमेंट होता है हम आपको इस रेट में देंगे, Okay sir. ठीक है। तो ये जरूरत इस बात की है कि अदर सॉफ्टवेयर में भी है ये कि पर्टिकुलर कस्टमर जो है ना, उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम इस रेट में देंगे, तो वो वहां पे पहले से ही सेट हो जाता है। जब भी उस कस्टमर का बिल बनेगा तो वो उसको कंसिडर करेगा। सपोज कोई डायपर है, एडल्ट डायपर है, एमआरपी 550 रुपए आ रही है, हमने उसमें 300 रुपए फिक्स कर रखा है। तो वो स्टाफ बिल बनाए या हम भी बनाए, तो हमें ध्यान रहे कि हम 300 रुपए देते हैं इनको। ठीक है। तो वो 300 रुपए खुद ब खुद सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो लास्ट 3 परचेस उन्होंने किया है, ठीक है, 300 रुपए में आप दे रहे हो, तो वो 300 रुपया वहां अप्लाई होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर उसमें पर्टिकुलर कस्टमर में जा करके हम उस प्रोडक्ट को फिक्स कर दें। अगर सर पर्टिकुलर पर्टिकुलर कस्टमर को फिक्स करोगे, फिर वो प्रोडक्ट में अगर मार्जिन कम हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो क्या होगा सर? नहीं, तो मार्जिन तो वो तो हमें ध्यान रहेगा ना। पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर दें, इस परसेंटेज जाएगा, एमआरपी भी बढ़ जाएगी मान लो, ठीक है सर। उसकी एमआरपी बढ़ गई तो भी मार्जिन के अकॉर्डिंग कर देगा ना। तो वो क्या, तो यही मेरे को लगता है अच्छा रहेगा कि लास्ट 3 परचेस को लेके वो उसका प्राइसिंग दे सके, ऐसे बोल रहे हो? या तो ऐसा कर सकें, और ज्यादा अच्छा ये रहता कि कस्टमर में जाकर के उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम फिक्स कर दें, भाई ये रेट में ये थोड़ा इतना परसेंटेज देना है। ये थोड़ा नामुमकिन है सर, क्योंकि आपके पास 500 कस्टमर होंगे और 5000 प्रोडक्ट होगा, एक एक कस्टमर के लिए, एक एक प्रोडक्ट के लिए वो कर नहीं पाएंगे। मगर आपने जो मेरे को ये फीडबैक दिया, हम कंसर्न डेवलपमेंट टीम से बात करेंगे सर। सो वी विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल रिवर्ट यू बैक सर। इट्स अ नाइस थिंग यू हैव टोल्ड अस। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में भी है, ऐसा नहीं है। बस कुछ कस्टमर होते हैं जिनको स्पेशली रेट हमने तय कर दिया कि भाई हमें आपको इस रेट में देना है, तो वो हर बार अपने आप उस रेट को उठा लेगा। या तो ये भी हो सकता है उससे पिछले परचेज से उठा लेगा, लेकिन पिछले परचेज के मुकाबले अगर मान लो रेट चेंज हो गया तो फिर वो लेटेस्ट को ले जाएगा। ऐसा आपका कहना है?
हाँ सर, तो वही होना चाहिए ना, क्योंकि अभी देखिए अगर कस्टमर के लेवल में आपने डिस्काउंट सेट कर दिया और कस्टमर को जब भी आएगा तो 10% अप्लाई हो रहा है, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इज द इम्पोर्टेंट वन। कोई भी प्रोडक्ट आप एक बार बोलोगे कि 30 रुपए को इसको बेचना है क्योंकि इसमें मेरे को मार्जिन इतना ही मिला, वो जो भी कस्टमर आए उसको 30 तो इजीली हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये कस्टमर के लिए एक प्राइसिंग, वो कस्टमर के लिए एक प्राइसिंग, या वो कस्टमर, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन अ टेक्निकल process. Then we have to think about this, what last purchase was the price, वो आपको शो कर सकता है और वो प्राइसिंग आप वहां डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा कर लो। we will discuss in internal team, so what possible is there, because I am not a develop person, नहीं but आप आपके जो सजेस्ट करिए। सजेशन है वो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, it will be very helpful, it is very helpful to us also। तो ये वहां पे 100 भी खुद ब खुद ले या 100 कर दे, 100 कर दे, ये पहले पिछला रेट ये था। राइट सर, राइट सर। और एमआरपी भी 100 कर दे वहां पे, तो ये एमआरपी था और यही रेट था, क्योंकि अगर एमआरपी बढ़ती है तो फिर वहां पे वो उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर सके। ओके सर, थैंक यू सर, ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये सर, शकील सर। यस सर, बोलिए सर। सर आपका वॉइस सुना नहीं दे रहा है सर। नहीं सर, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है सर। अगर आपको नहीं हो तो फोन से भी ज्वाइन हो जाइए सर, फोन में भी आप ज्वाइन हो सकते हो सर। until that marshal at pharmacy, yeah sir, yes sir, वो you can ask the question sir। शिव मेडिकल सर, शिव मेडिकल फार्मेसी। सर yes sir, anyone can ask the question please। Hello, Arun sir. You said the staff can't give more than 10% discount. If I do some changes in the staff management, Okay. so can you show that setting? You're also on mute, by the way. Apart from that, Isaac, so 10% was used as a example. There is a lock button in the system where you can, if the operations is like you want to give staff a range that they can maybe give the discount between 0 to 12% or 13%, 15%, whatever that may be. So you can use that lock button and write down the highest possible discount that you want them to give. So if you lock that at 15%, your staff will be able to give the discount between 0 to 15. Okay. So this can be set across categories. Yeah, you can do that. You can also do that product wise in the save and set button. Everywhere that you will find in the system that you can set discount, there is a lock button next to it. Arun sir, can you please share your screen? Just go to inventory and just we want to see the lock button. Yeah, this is the lock button. When you're trying to edit the product and set the discount, you will find that. Okay. This is inventory. This is in inventory. I am talking about staff. Arun sir said something about staff. No, this is how it would be controlled. Okay, so this is locked at 12%. So you're saying the staff can reduce the discount from 12 to 11, 10, which is Yeah. basically whatever is the staff is getting means low discount, then it is the margin will be high for you, right sir? But up to 12 you can give, because after that 12 it will be maybe lost to you or something, you will get the margin will gets down. So if a friend of some staff is coming and is giving 15% to the
to his friend, right? So 3% will be a loss to you, or there will be a decrease in your margin. So beside that 11%, 10%, or 90 up to 0, the margin will raise to you, right, sir? Yeah, got it. So I have to do it at inventory level only. Yeah, inventory level only. So it will, what happen is, in admin rights you can do anything. So even the lock is there in admin, you can change the discount in admin rights. But whenever it is logged through staff rights, the lock will start working. They cannot apply that more than the discount what you have precisely mentioned. Okay, thank you. Yes, sir. Sir, any other? Yes, sir. सर और कुछ क्वेश्चन सर? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने सेल्स डिस्काउंट फिक्स किया कि डिस्काउंट वाइज हम जो है प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स कर देंगे, मगर ये इस तरीके से हो सकता है जैसे मार्जिन वाइज, इन द सेंस जैसे कि हम अपने प्रॉफिट को वो परसेंटेज को फिक्स कर दें कैटेगरीज में। सर हमारे में एक्चुअली यू कैन सी द प्रोडक्ट्स सर्च थ्रू मार्जिन्स कितने मार्जिन हमको मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, और वो प्रोडक्ट में आप डिस्काउंट सेट कर सकते हो। नहीं देखिए सर, प्रॉब्लम ये आती है जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदे, जैसे 3 महीने पहले कुछ प्रोडक्ट खरीदे, और उसके बाद जो है रिसेंटली 10 डेज बैक जो है उनका प्राइस जो है ना एमआरपी रिवाइज हो गई और उनका जो है प्राइस डिफरेंट हो गया। अब होता यह है कि भी कुछ नए बैच के वो हो जाते हैं, कुछ पुराने बैच के जो कस्टमर को चले जाते हैं इन अ हरी, तो उसमें जो है डिस्काउंट तो हमने फिक्स कर दिया, मगर वो जो मार्जिन है वो वेरी कर जाता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा हूँ। जैसे आप ये देखिए कि कोई जो ऐसे वो एंटासिड्स होते हैं या पेंटाप्राजोल टाइप जो कैप्सूल्स होते हैं, समझ रहा हूँ। उनके 4 महीने पहले जो एमआरपी है वो चेंज हो जाता है, अब बढ़ के जो है ना मतलब 20% इंक्रीज ही हुई है लगभग, डिक्रीज होगा तो आपको उससे जो है ना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस जब बढ़ेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, राइट सर? नहीं मगर ये वेरिएशन जो है ना, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने अपना मार्जिन 10%, 15% जो भी फिक्स करना है पर्टिकुलर ड्रग कैटेगरी में, वो फिक्स हो सकता है सर, बट चाहे उसका हो सकता है एमआरपी कुछ भी होता रहे। हाँ सर, वो मार्जिन वाइज हम सेट कर सकते हैं सर, अभी के लिए हम सेट कर सकते हैं। जब परचेस हम करते हैं और सेव एंड सेट लोकेशन में आपको मार्जिन वाइज भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि 10% आपको मार्जिन वाइज करना है तो वो डिस्काउंट में कितना होगा वो भी सेट हो जाएगा सर। नहीं देखिए वो ऐसा होता है कि भी वो तो पर्टिकुलर ड्रग के कैटेगरी में पर्टिकुलर जाकर आइटम, मतलब हाँ आफ्टर परचेस पर्टिकुलर ड्रग इटसेल्फ के अंदर जाकर वो हमें मार्जिन देखकर वो डिस्काउंट से लोड, आई थिंक नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। एक जैसे हमारे फ्री टाइम में, जैसे कभी दोपहर को 1 या 2 घंटे फ्री हैं, तो उसमें जो है हम सारे जो है ये मार्जिन वाइज जो है वो फिक्स कर दें एक अच्छा तरीके से कैटेगरी, जैसे पूरी ड्रग कैटेगरी पे जैसे हमें 15% मार्जिन सेट करना है कि भी चाहे कोई कम हुई घटी कुछ नहीं लेना देना, हमें 15% मार्जिन चाहिए। Neelam, do we have any option like that? No, I don't think so that currently you can apply category wise margin, but definitely when you're getting new purchases there, like Arun sir said, जब आपको न्यू परचेस आता है तब आप अपना मार्जिन वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डिस्काउंट जो है वो फिक्स हो जाता है। सो आई थिंक करंटली जो है आपके सिस्टम में शायद ये है मार्जिन बिलो दिस मार्जिन प्रोडक्ट विल बी नॉट बिल्ड से 3%। that is a completely different thing sir, that is complete restriction. This is about मगर setting इसको discount. जो है थोड़ा सर एक्चुअली हाँ आप जी, जो बात कर रहे एक्चुअली हो, आप जो बात कर रहे हो वो आइटम वाइज सेफ्टी मार्जिन है सर। सेफ्टी मार्जिन के बारे में कब बात कर रहे हो? जैसे कि हमने वो सेफ्टी मार्जिन नहीं आप मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए सर।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये ऑप्शन जो है ना आपके पास, मतलब सिस्टम में ये है, मतलब एक तरीके से बस उसको ब्रॉड करने की जरूरत है। मतलब आपके पास मार्जिन का जो है ना, ये इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें जो है, देखिए अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट चाहिए, इनकम चाहिए उस, तो हमें जो है मतलब एमआरपी या पीटीआर या कुछ भी होता रहे, तो मतलब ये चीज कंसीडर करनी चाहिए। सर अभी के लिए क्या प्रॉब्लम है सर, प्रोडक्ट वाइज हम मार्जिन दे रहे हैं, तो मीन्स प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट हम सेट कर पा रहे हैं। मार्जिन में तो हमको बैच टाइप वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज एक बैच का दाम होगा 300 रुपया, कल एक बैच का दाम होगा 400 रुपया, फिर कल अचानक से 350 भी बीच में एक बैच आया जाएगा जो केवल पुराना है, ठीक है सर। तो इट शुड बी वर्कड इन अ बैच लेवल डिस्काउंट। तो हमने अभी तक प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंट ही दिया है, बैच लेवल हमने दिया नहीं। और मार्जिन वाइज जो आप बोल रहे हो वो अभी के लिए हम परचेस में ही दिया हुआ है। परचेस में जब हम सेव करोगे और सेव एंड सेट लोकेशन का ऑप्शन आएगा, तो वहां आपको मार्जिन आएगा, तो भी आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपके 10 प्रोडक्ट है और आपने देखा कि मार्जिन एमआरपी 300 रुपया है, तो आप ये जो बैच है इसमें ये जो प्रोडक्ट के लिए सेट कर पाओगे। तो वी विल टेक योर सजेशन सर to the development team. So we will have a discuss on that and we will revert you back. Thank you for your feedback sir. So we can सजेशन, yes sir, thank you for your feedback. एक और सजेशन, Yes sir, please sir. एक और सजेशन, कोई आइटम सर आपका बिल में परसेंटेज। वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, एक मिनट थोड़ा आप देखिए सर। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ सर बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम कोई आइटम जो है बिल बनाने के लिए उसमें डालते हैं ड्राफ्ट में, ठीक तो है, उसमें जैसे लैंडिंग प्राइस हमें दिख जाता है नीचे पॉपअप में, और डिस्काउंट एक मिनट सर आपका वॉइस। भी, परसेंटेज भी हम सेट कर सकते हैं, मतलब वाइल बिलिंग। अब आ रही है? यस सर, आपने वो जो ड्राफ्ट में प्राइसिंग के लिए बोला था, लैंडिंग प्राइस के बाद में क्या बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कैन यू रिपीट इट सर? मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप जो है वो हमें लैंडिंग प्राइस दिखा देते हो और डिस्काउंट परसेंटेज दिखा देते हो यस वाइल बिलिंग, यस। तो इसका जो डिफरेंस है, जो मार्जिन परसेंटेज है, वो आइटम वाइज वहां दिख जाए, तो इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे बिलिंग करते समय आपको चाहिए ये? हाँ, देखिए ऐसा होता है, जैसे आपका जो है नीचे के बिल के सबसे नीचे दिखता है हमें मार्जिन, मगर वो सारी आइटम्स का क्यूमुलेटिव दिखता है, मतलब बिल के अंदर। जैसे आप कोई भी सेल्स इनवॉइस खोलोगे, एक मिनट सर। आप कोई भी सेल्स इनवॉइस खोलोगे, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट सर। आप कोई भी, हाँ जी, हाँ, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ आपको मार्जिन दिख रहा है 47.33%, राइट? ये टोटली आपका ओके लैंडिंग ओके प्राइस और एमआरपी के डिफरेंस वैल्यू ही है। ओके। ये मतलब ये एक नया फीचर ऐड किया है या नहीं, मैंने ही अभी नोट ये किया है? पहले से ही है। इसका डिफरेंस वैल्यू यही है, पीटीआर मींस लैंडिंग प्राइस, एलपी माइनस एमआरपी, वही आपका मार्जिन यहाँ परसेंटेज मिलेगा। व्हाइल बिलिंग यू विल गेट दिस। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। एनी अदर क्वेश्चन सर? ओके सर, आई थिंक और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर आप सबको, क्योंकि बहुत सारे के नए नए फीचर्स रिक्वेस्ट आपको चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए। वी हैव टेकन ऑल द फीडबैक फ्रॉम यू। आपको ऐसा लगता हो कि बहुत दिन से मेरे को ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहे, ऐसा है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरा एक सजेशन है, क्या है कि हम जो भी डेवलप करते हैं, तो आपका जो माइंड में होता है वैसे ही डेवलप नहीं होता है। उसका एक उपाय हमने दूसरे तरीके से रखा होता है कि इसका ये ऐसे भी दे सकते हैं। तो आई वांट यू एवरीवन टू गो थ्रू वन थिंग ऑन अ डेली बेसिस और सम वीकली वंस और व्हाटएवर। सो आप जब भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो, आप प्लीज विजिट कीजिए, शॉर्टकट हेल्प में जाइए एंड यू सी दी व्हाट्स न्यू।
तो व्हाट्स न्यू में आपको क्या आएगा, हमने रिसेंटली क्या क्या अपडेट्स दिया है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपने कुछ मांगा हो और हमने अपडेट किया हो और आपको पता ही ना चले। तो आप ये कीजिए, इसको पहले आप देखिए रोज के रोज, और आपको अगर इसमें कुछ डाउट है, यू कैन रेज द टिकेट और सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगा कि ये क्या है, कैसे हमने अपडेट किया है, इसके बारे में सब जानकारी आप जान सकते हो। सो एवरी मंथ अपडेट्स मिल जाएगा सर। तो उसमें आपने जो मांगा, आपका जो अभी चाहिए, आपको ये फीचर रिक्वेस्ट था और ये हमने नहीं बनाया, तो यू कैन सी दिस थिंग। एंड अनदर थिंग, पाइपलाइन में अगर आपने आज मेरे को एक फीडबैक दिया और आपको ऐसा लगता हो कि हमने डेवलपमेंट टीम को नहीं, उसको सजेशन में नहीं डाला या नहीं दिखाया, देन यू आल्सो हैव अ सजेशन। डेवलपमेंट पाइपलाइन करके इधर एक चीज है जो आपको यहाँ अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के नीचे शॉर्टकट में डेवलपमेंट पाइपलाइंस मिलेगा। तो वहां जाके आप ये देख सकते हो कि क्या क्या आगे फीचर आने वाला है, वो डेवलपमेंट फीचर्स में क्या क्या है, क्या क्या बनाया है, उसकी प्रायोरिटी भी क्या है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ आपको कस्टमर को ये सब दिखाई दिया है सर। So you can take a look on a daily basis or a weekly once or monthly twice or something, that it will be very useful to you. तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बार बार हम एक ही चीज पूछ रहे हैं मगर वो आ रहा है कि नहीं, क्या है, कस्टमर को क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आई वांट यू टू सजेस्ट दिस थिंग कि यू डेली टेक अ लुक रिगार्डिंग दिस। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट्स इनोवेशन कैसे हो रहा है, बहुत सारे इनोवेटिव इनोवेशंस हम लेके आ रहे हैं। yes, we are new, already we have passed all these things, so much of things is थे, बहुत सारे फीचर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सब हम क्लियर कर रहे हैं। सो प्लीज टेक अ लुक रिगार्डिंग दिस सर। so it will be very helpful. So daily or monthly wise you see what's new and the development pipeline, दोनों से आपको मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट, आप फीचर रिक्वेस्ट जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है और ऑलरेडी आ गया है, मगर आपको कुछ पता नहीं कि आ गया है, मैंने जो मांगा वो आ गया है। आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो सर। सो थैंक यू सर। सो इफ एनी अदर क्वेश्चन इज देयर, सो you can There's ask. one question in the chat as well. There is a suggestion actually to do slab wise discount, and there is another thing that if you're billing under 1000, so it would be 10% discount, and if you're billing above 1000, then it can be 15% discount. So actually we have already created a feature like that. It's called offer engine. And tomorrow actually we have a community call for that. So if anybody is interested in knowing that feature, you can join tomorrow as well for 4 p.m. So any questions? Yes sir. Hello, Arun. Yeah, just one thing. Yes sir. This feature request for discounts on staff level. Matlab, this staff can not give more than a set discount for this category, Okay, if that is possible. I think it is already there. Neelam, is Can there? you please show that? I think we have that. Could you just repeat it again? So right now, what Sir showed was inventory. So if I put 10% on one product and I scan or type in that name, it shows up as 10%, and I can give below 10, like 9 or 8. Sir, So below you can give sir. I can give, yeah, I got it. But by default, it comes as 10. So I Yes, wanted by definitely. default to come as 0. No sir, that will So not come. That will not so come. We cannot that's do. the We cannot. reason Yeah, is yeah, tell anything me. like staff का कुछ है तो category सर, wise. अभी क्या होगा सर, आपने एक प्रोडक्ट को 5% दिया, ठीक है सर, Mhm. और आपको ही मालूम है कि यू ओनली नो दैट यू हैव गिवन 5% एज एन एडमिन लेवल। स्टाफ डजंट नो दैट व्हाट इज द मार्जिन दे आर गेटिंग। You as a owner will know that what is the margin and what margin you want, you will set that. Then if you are setting it 5%, right, and again it will come as a default 0, then what is the use case that customer your staff itself will don't know that what margin it is getting or what we can do. Because as a staff level, when you go to staff level, while billing, we will not show the margin, we will not show the landing price, we will not show anything to them. It will be only showed to the admin person, right?
सो वो 5% में मार्जिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो कैसे स्टाफ को पता चलेगा? Then it will come to default 5%, means they will know that this is a margin. If it is locked, then they cannot change. They can change to the downwards, not for upwards. Like 6 he cannot go, he can go for 4, 3, 2, 1, 0. So this is the thing, user case. May I know, sir, your pharmacy name, sir? Yeah, just a second. My thing was, for example, let's take insulin. Okay, Okay. so if I set I sometimes we give 0% discount also, Okay. and there are chances where if I set default discount and then they sell it for not regular customers, and then that will be a issue. So I would require it to be zero, and yeah, and the customer should, I mean, the staff should not be able to give discount for more than say 5 or 6% or whatever I set it. So Like you that. want, you are telling that whenever they just type the name and enter the sales, so it should not show the default discount, it should go for 0, like that you are telling? Yes, zero, and it should not go higher than 5 or whatever I set it as. Okay. So we have to, I think this is a not the case, but we will discuss internally to our team and we will get back to you. May I know your pharmacy name, sir? Yeah, it's Durvani Medicals, Zurvani Medicals, from where, sir? Bangalore. Bangalore. Nice to meet you, sir. Thank you for suggestion. If any others have any questions, or otherwise we can wrap this meeting, sir. Think, Neelam, can we wrap this? Okay, thank you, Neelam. Thank you, sir. Thank you for everyone who joined.